हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज दोबारा से लेकर आया हूं आप लोगों के पास नो योर डिपार्टमेंट। आपको जैसा कि पता ही है, डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी नया हुआ है, किसी भी स्कूल के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक नया पेटेंट कराया गया, कोई नया कॉपीराइट लिया गया है, कोई भी नई रिसर्च हुई है, अगर स्टूडेंट्स का कोई एजुकेशनल टूर हुआ है, या फैकल्टी ने भी नया कुछ और भी किया है, या कोई नए जनरल दिए हैं, नई उपलब्धि हासिल की है, तो उन सबको लेकर हम बात करते हैं। फैकल्टी को इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे सवालात करते हैं उनके डिपार्टमेंट के बारे में। आज एक और ऐसी एक अलग शख्सियत मेरे साथ बैठी हैं जिनसे बहुत दिनों से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन हो नहीं पाई थी क्योंकि कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ व्यस्तता वाला कार्यक्रम उनका भी आ जाता था और हम लोग भी कहीं ना कहीं फंस जाते थे। लेकिन फाइनली आज उनसे मुलाकात हो गई। मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ और उनका वेलकम करता हूँ और उनसे करेंगे चंद सवालात। इनका नाम है स्मिता ए मैथ्यू, जो कि एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइंफॉर्मेटिक्स से। Smitha Mathew is the academic coordinator of the School of Biotechnology and Bioinformatics and has been associated with the university for 16 plus years. A biochemist by education, she started her career as a lecturer and after a few years into teaching made a conscious shift to academic administration on joining the School of Biotechnology. After a decade and more in academic administration, she obtained a PG diploma in HR and administration from the prestigious Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Her current professional interests lie in curriculum design, competency-based recruitment and hiring, as well as design thinking. She is an avid reader and loves to indulge in creative writing and photography every once in a while. And actually, I would add in it that she also sometimes travels, and I think she travels a lot. So she did not tell us about that. Thank you so much. अब कुछ सवालात हम उनसे पूछेंगे। पहले उनका वार्म वेलकम करते हैं। मैम, हाउ आर यू? एंड वेरी वार्म वेलकम हियर इन नो योर डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच अभिनव, इट्स ग्रेट मीटिंग यू। वेलकम मैम, माय प्लेजर। और सवालों की अब शुरुआत करते हैं। पहला सवाल यही, एज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइंफॉर्मेटिक्स, could you tell us about the curricular activities of the school, especially in the light of NEP 2020? Okay, well, thank you for the question. First of all, it's my pleasure to talk about the School of Biotechnology and Bioinformatics and about what we do as part of our curricular activities. So currently our focus is on developing the curriculum for programs in line with NEP 2020. Okay. This is actually the policy of the government, and it is a very, very progressive policy in terms of higher education. So in context with that, we have now begun our curricular design curricular design process, and our programs will now be implemented from academic year 24-25. That's most of our programs. However, it is pertinent to note here that we are the first school in our university to have started our pilot program, which is based on NEP itself. It is a 4-year honors program. Oh, wonderful. And it is a BSc honors program in biotechnology and bioinformatics. So we, as I think all of our faculty, we came together, studied the NEP policy, attended a lot of workshops by people who are part of the steering committee of NEP itself, and basis the guidelines given by the state government as well as the UGC and AICT, we have come up with programs. So, well, the thrust of all our programs, if I am to say, which are based on NEP, एक तो ये है कि multidisciplinary programs हैं, उसके अलावा students के research aptitude को develop करने की हम कोशिश कर रहे हैं courses के through. Oh yes. That is something that we are doing. And we are also trying to develop skill sets in students which are important for real life and real world applications. So that they come out as graduates who have really skills which can be seamlessly transferred from classrooms to real world applications. Oh, definitely. Increasing their employability. Okay. So yeah, that is currently what we are doing as part of our curricular activity. Well, beautifully and nicely explained, ma'am. अब second question आपसे इसी के बारे में पूछता हूँ. Could you explain or elaborate on the features of the curriculum and its design? I know actually you have said a lot, but if you can actually add something. Okay. Well, to begin with, I think our curricular design is largely focused on the feedback that we receive from the industry
and the academia. How do we do that? We actually have people from external bodies, reputed institutions and industries who are part of certain committees like the IQAC of the university. That's the Quality Assurance Cell. Oh, yes. They give us feedback. Say they tell us to start a new program. Now we will be starting with a new program in the next year, which is an MSc program in genetics and genomic counseling. Wow. So yeah, it's a very niche program, and it is something that I think our country needs a lot, genetic counselors, because currently for a population of 1.4 billion that we have only 300 genetic counselors. Oh my God. So it's very, very, very less, especially. Yes, yes. So in that sense, that's one program that we intend to transfer start from next year. However, at this stage, since you've asked me about the design process, I would say that our design process is such, like I said, there's feedback coming in from the industry. Basis the feedback that we get, we again bounce these ideas off other people from the industry, other experts. हम उनसे उनकी राय मांगते हैं, वो हमें फीडबैक देते हैं. Sure. उस हिसाब से फिर हम हमारा प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स जो है कि कोई ग्रेजुएट होगा तो क्या कर पाएगा, वो बनाते हैं. उसके बाद हम करिकुलम का पूरा डिजाइनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं, फैकल्टी एक्सपर्ट्स जो हैं, they will make particular subjects and courses, so on and so forth. So basically, it is outcome based. Okay. How does your curriculum design process ensure real world applicability and the application especially, Correct. and you have told me about that, of the concepts taught in a classroom and laboratories? Okay. Now, see, in today's times, students have to be lifelong learners. पहले जैसे होता था कि आप पढ़ाई करते हैं, आपकी पढ़ाई खत्म होती है, आप जॉब पे लगते हैं और फिर आप कंटिन्यूअसली जस्ट कंटिन्यू आपका काम ही कर रहे हो. करेक्ट करेक्ट. तो अब जो है दैट इज चेंजिंग. अब जो है स्किल्स भी आपके कॉन्स्टेंटली अपडेट करने की जरूरत रहती है आपको, राइट. प्लस जो आपने पढ़ा होगा जब तक आप ग्रेजुएट करते हैं या 4-5 साल काम करते हैं, वो ऑब्सोलीट हो जाता है, राइट. तो यू नीड टू बी एडेप्ट एट एक्वायरिंग न्यू स्किल्स ऑल्सो, and probably also unlearn what you have learned and relearn new concepts so that you are relevant to the time, right. So ये जो skills हैं, इनको develop करने के लिए we actually in our curriculum design का process we are trying to incorporate pedagogical techniques. If I have to give an example, I would say project based learning. That is one. इसमें जो होता है, हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स, ये स्टूडेंट्स को इन ग्रुप्स अलॉट करते हैं. स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 सेमेस्टर फाइनली ये लोग एक या तो मॉडल बनाते हैं या प्रेजेंटेशन करेंगे. Okay, yes. Right? Now, so they're doing the research actually simultaneously. Yes. Also, now how does this translate to real world applicability? Once you start working, you have to constantly recalibrate yourself in order to work in a team. You can't work single-handedly once you enter your work world, right? Yes. You have to constantly adapt to other people, adapt to their techniques. All of that in project-based learning also you will learn. Team building is one. You will learn how to accept ideas and feedback from others, even if it is critical. आप उसको positively लेना ही है आपको, जिससे कि आप presentation बना सकें. Yes, you can grow, especially. Yes. So these are some things like, this is one application I would say that, which helps you in your real world, life once you leave the portals of the college, right? So such techniques are there which we are employing in our delivery, such that students develop critical thinking, they develop communication. Yes, communication, critical thinking. Because definitely. At any point of time, I think research abilities. Definitely. At any point of time, education should probably help you, okay, such that you add value wherever you go, okay, or you add value and come up with a new product, या आप कुछ existing है उसी process को या product को आप improve कर रहे हैं. अगर आपने ये contribution भी किया है, उसको आप किस तरह present करेंगे, that is where communication comes in handy. वो होना चाहिए आप में. Collaboration होना चाहिए. You should be willing to collaborate and work with others in a team, right? So the 4 C's of curriculum design are what we actually implement in our curriculum in different courses and the manner in which we deliver them. Okay, very well explained, ma'am.
और अब शुरुआत करता हूँ एक और सवाल की, वो पूछता हूँ, व्हाट वुड यू से इज द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय योर स्कूल? Well, the thrust of our programs that are offered by our school, I would say one is research capabilities. Constantly, we are trying to encourage our students to think out of the box, okay, and to think innovatively on how to solve problems and develop an attitude towards lifelong learning, okay, that. Apart from that, if I am to talk of the thrust, we are also trying to focus now in all the new programs that we will offer henceforth from 24-25. Sustainability is one concept which will be a thrust of our programs, especially since we belong to biotechnology school, right? So we are trying to develop sustainable solutions in food, environment and healthcare. So I would say, yeah, those are the thrusts of बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली जो स्कूल है वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों में पायनियर रहा है, स्पेशली जो शुरुआत में आई थिंक जो 2 इंस्टीट्यूट थे जितना मुझे अच्छे से याद है, वो है एक तो RIT, correct, and second one is Bioteknology, School of Biotechnology. We started in 2003. 2003. Yes, और उसके बाद बाकी सारे schools यहाँ पर आए हैं, तो in that way actually you're doing a lot of pioneer work in the field. Okay, what innovative programs does the School of Biotechnology and Bioinformatics intend to offer in the next academic year? So in the next academic year, like I said, all our curriculum is being revised so that they are aligned to NEP 2020. Apart from that, we are starting with a new program which is MSc Genetics and Genomic Counseling. Okay. Now this, as I mentioned earlier, there are just 300 odd counselors available for a population of 1.3 billion, which is way too small. Way too small. I think it's some 0.001%, something like that. Less than that. Less than that. Less than that. Less than that. So when we are looking at just counselors in hundreds, okay, for a population of 1.4 billion approx, okay, there is a dire need for counselors, okay, because genetic counseling can actually help in many ways. And I'm thinking, sorry to interrupt you, ma'am, that we are saying that so much unemployment in our country. Correct. And we have the specially opportunity to do that. कि आप बता रहे हो कि काउंसलर्स की बहुत कमी है, तो इतनी सारी अगर पॉपुलेशन है उनमें से काफी सारे काउंसलर निकल कर खुद आए और उनके पास तो एम्प्लॉयमेंट तैयार है. आई थिंक एम्प्लॉयमेंट तो तैयार है, लेकिन यहाँ पे द थिंग इज कि एजुकेशन जो है आपको जो मिनिमम मास्टर्स लेवल का यू नीड टू टेक, उसके बाद आपने सर्टिफिकेशन करना है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इट्स कॉल्ड BGCI, बोर्ड ऑफ जेनेटिक काउंसलर्स ऑफ इंडिया. उसके बाद आप एक ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड काउंसलर बनते हैं. करंटली जो है डॉक्टर्स ही जेनेटिक काउंसलर्स हैं, जो आपके मतलब रिपोर्ट्स देख के आपको बता देते हैं, या हिस्ट्री देख के, या आपके पेरेंट्स की हिस्ट्री देख के बता देते हैं कि यू आर प्रोन टू कार्डियक डिजीजेस और डायबिटीज और थिंग्स लाइक दैट, कैंसर. बट दैट इज नॉट एक्चुअली राइट एलिजिबिलिटी, यू मीन टू से. हमें और भी ज्यादा प्रिसाइज मेथड्स हैं. So genetic counseling जो है will actually help you, okay, what you will be studying rather is courses which will enable you to actually predict correctly and accurately what is the predisposition of a person to a particular disease. Also check if a pregnancy is viable, whether the child is likely to have any sort of abnormalities. तो आप टाइम पे अगर जरूरत पड़े तो आप टर्मिनेट कर सकते हैं. Some things like that. Diseases का diagnosis and treatment. उसके लिए भी studies which lead to becoming a genetic counselor can help. So basically what you're doing is patients को आप informed decisions लेने में help कर रहे हैं. Oh yes. एंड छोटी से छोटी चीज जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे हम बोलते हैं, लेकिन उसमें भी देयर इज अ सर्टेन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. सो वो सब आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे. अगर आप प्रेडिक्ट ही शुरू से कर लेते हैं तो आप अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले पाएंगे. एंड वी आर हेल्पिंग डॉक्टर्स ऑल्सो इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर ट्रीटमेंट इफेक्टिवली. डेफिनेटली, क्योंकि अब ये सबसे अच्छी चीज़ है एज यू मेंशन मैम, कि अगर आपके पास बीमारी की पहले से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है कि आपकी कितनी पीढ़ी में ऐसा ही रहा है, अब कितनी जनरेशन्स में पहले रहा है, कि 6th और 7th और 3rd और 5th जिस तरह से निकल कर आती हैं. अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो स्पेशली दत्त फैमिली में ऐसा रहा
कि नरगिस जी के साथ ऐसा रहा, संजय दत्त जी के साथ ऐसा रहा, उनके पहले कुछ जनरेशन्स में ऐसा रहा, और संजय दत्त के फादर स्पेशली उनके साथ ऐसा रहा, सुनील दत्त साहब के साथ। तो संजय दत्त जी को ये बाद में पता चला, संजय दत्त एक्चुअली रियलाइज्ड कि अच्छा ये फैमिली में था ऐसा कहीं ना कहीं। सो वी कैन फाइंड इट आउट, फिगर इट आउट लाइक दैट कि आई एम श्योर कि अब तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि अब आप पहले से पता कर सकते हैं किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफिलिया है या समथिंग लाइक दैट, थैलेसीमिया एंड ऑल ऑफ दीज डिजीजेस व्हिच आर एक्चुअली मे बी इवन इन रूरल एरियाज में जो बहुत ही प्रेवलेंट हैं, जिनके लिए भी, बट ऑफ कोर्स ये टेस्ट अब जाके थोड़े बहुत अफोर्डेबल हुए हैं, सो मच सो दैट सर्टेन टेस्ट आर इवन अवेलेबल ऑन Amazon. Okay, if you want to only check, not maybe for diseases, but at least for, you know, if you want to identify कि आपका heritage या lineage क्या है, oh yes, उसके लिए. So there are people who have identified कि, you know, 1000 generations prior उनके somewhere in the distant family probably, you know, somebody got married to an African or a Eurasian. okay, So that particular transfer, right, they have been able to identify. So even to establish lineage from several, you know, thousands of, not thousands, maybe at least hundreds of generations ago, you would be able to identify that. oh my god, So that's even to surprising, establish your especially. lineage, yes, genetic studies will help. ओह वंडरफुल। तो ये थी आज हमारे साथ स्मिता ए मैथ्यू, जिन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे जवाब दिए कुछ सवालों के, और उन्होंने हमें बताया आपकी लिनिएज के बारे में भी, और आप भी अगर पता करना चाहें तो ज़रूर पता कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ गई हैं, बट प्लीज़ ये सब पता करने से पहले किसी से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट पर्सन है आपको बताने के लिए। अपनी तरफ से खुद ऐसे डिसीजन मत लीजिएगा जब तक किसी से एडवाइस ना लें जो कि एक सही पर्सन हो आपको एडवाइस देने के लिए। तो बड़ा आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी यहाँ पर ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much.